Introduction. नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे अंग्रेजी व्याकरण का सबसे जरूरी हिस्सा टेंस का। बिना टेंस के अंग्रेजी बोलना अधूरा है। Definition. Tense shows the time of an action. टेंस यह बताता है कि काम कब हुआ है, भूतकाल, वर्तमान या भविष्य में। 2 types of tense. टेंस के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो काम अभी हो रहा है। पास्ट टेंस, भूतकाल, जो काम पहले हो चुका है। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जो काम आगे होगा। हर काल टेंस के 4 से 4 रूप होते हैं। Indefinite/simple. Continuous/progressive. Perfect. Perfect continuous. इस तरह कुल मिलाकर 12 टेंसेस होते हैं। 3 present tense. A present indefinite, simple present. Rule, subject plus V1 s/es plus subject use, habit, routine, universal truth examples. He plays cricket. वह क्रिकेट खेलता है। The sun rises in the east. सूरज पूर्व से निकलता है। B. Present continuous. Rule, subject plus is/or/m plus V1 plus ing plus subject use, action going on now examples. She is cooking food. वह खाना बना रही है। I am reading a book. मैं किताब पढ़ रहा हूँ। C. Present perfect. Rule, subject plus s/a plus V3 plus subject use, recently completed action, past connected with present examples. They have finished the work. उन्होंने काम पूरा कर लिया है। He has gone to school. वह स्कूल गया है। D. Present perfect continuous. Rule, subject plus has/have been plus V1 plus ing plus subject plus since/for plus time use, action started in the past, still continuing examples. I have been teaching for 5 years. मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। She has been working since morning. वह सुबह से काम कर रही है। 4. Past tense. A. Past indefinite, simple past. Rule, subject plus V2 plus subject use, action completed in the past examples. He went to the market. वह बाजार गया। I watched a movie yesterday. मैंने कल फिल्म देखी। B. Past continuous. Rule, subject plus was/were plus V1 plus ing plus object use, ongoing action in the past examples. She was dancing. वह नृत्य कर रही थी। They were playing football. वे फुटबॉल खेल रहे थे। C. Past perfect. Rule, subject plus had plus V3 plus subject use, action completed before another past action examples. The train had left before I reached the station. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। D. Past perfect continuous. Rule, subject plus had been plus V1 plus ing plus subject plus since/for plus time use, action going on for some time in the past examples. I had been studying for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। 5. Future tense. A. Future indefinite, simple future. Rule, subject plus will/shall plus V1 plus object use, future action, decision examples. I will help you.
मैं तुम्हारी मदद करूंगा। They will come tomorrow. वे कल आएंगे। B. Future continuous. Rule, subject plus will slash shall plus be plus B1 plus ing plus subject use, ongoing action in the future examples. I will be reading at 8 p.m. डिस्टर्ब मत करो, नहीं रख दे। मैं रात 8 बजे पढ़ रहा हूँगा। C. Future perfect. दिया काम कर दे मारे। Rule, subject plus will slash shall plus have plus B3 plus object use, action completed in future before a given time examples. She will have completed the work by tomorrow. वह काम कल तक पूरा कर चुकी होगी। D. Future perfect continuous. Rule, subject plus will slash shall plus have been plus B1 plus ing plus subject plus since slash 4 plus time use, action continuing up to a future time examples. I will have been living here for 10 years by 2026. 2026 तक मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँगा। 6. Common mistakes. Don't use V2 in present tense. Crossmark he go to school yesterday. White heavy check mark he went to school yesterday. Don't mix tenses in one sentence unnecessarily. Crossmark I am go yesterday. White heavy check mark I went yesterday. 7. Practice sentences. Translate into English. वह रोज स्कूल जाता है। मैं कल बाजार गया था। हम अगले हफ्ते दिल्ली जाएंगे। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले छूट चुकी थी। 8. कंक्लूजन दोस्तों, आज हमने अंग्रेजी के सभी 12 टेंसेस नियमों, प्रयोग और उदाहरणों के साथ देखे। याद रखिए, टेंस में महारत पाने का एक ही उपाय है, रोजाना अभ्यास।